Hi, good afternoon everyone and हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द स्टूडेंट्स. आई नो आप सब enjoy किए होंगे कल के डेट पे. एंड सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास ऑन रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन पे हम लोग थे लास्ट क्लास में. मैंने आप लोग को क्लासिफिकेशन समझा दिया था कि क्या क्या उसके मेजर टाइप्स हैं. ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है. तो टुडे विल सी द all the specific description of all the types. I think दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर विथ यू ऑल और पर्पज़ भी आई थिंक क्लियर होगा. एंड टुडे विल सी द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हम रिसर्च डिज़ाइन जब पढ़ेंगे तो आपको ये इस टॉपिक ये जो पॉइंट्स हैं उन सब से गो थ्रू होना है. तो मैं अभी से ही वो चीज़ें आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपको जब मैं वो टर्म्स यूज़ करूँ पर्टिकुलर तो आपको फिर confusion नहीं होगा. Okay, so first is time. These are the some important terms or we can say elements. First is time. In this research design हम time को frequency जैसे how frequently we provided the interventions, how frequently हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, तो दैट विल कम्स अंडर द टाइम्स और फ्रिक्वेंसी. सेटिंग मीन्स नेचुरल और लेबोरेटरी सेटिंग या फिर इन द फॉर द अदर पीपल दोज आर डूइंग द रिसर्च इन द lab. So they write the lab settings, right? But we मतलब always conduct our research in the field of practical. So that is clinical setting, right? So we'll put the name of that particular hospital where we conducted this study. Okay, next is subjects are जिस पे आप स्टडी कर रहे हो. दैट वी ऑल्सो कॉल दी सैम्पल, दैट वी ऑल्सो कॉल दी रेस्पॉन्डेंट, दैट वी ऑल्सो कॉल दी सब्जेक्ट्स. ओके, इंडिविजुअल हु टेक पार्ट इन द स्टडी और हु विल बी ऑब्जर्व्ड, जो हमारे स्टडी में पार्ट लेगा. जैसे माई सैम्पल साइज इज 60. ओके, 60 का है तो दैट 60 पीपल विल बी सब्जेक्ट्स. ओके, सब्जेक्ट्स ऑफ माई स्टडी. Variables means focus on study. Variables, I'll teach you variables are dependent, independent and extraneous. Dependent and independent variables are like a characteristic, or we can say the contributes, or we can say the one variables, two variables, three variables. Some variables are interrelated with each others. Okay, investigator role. In some condition unobstructive or allocate participants or to different condition. Investigators means there is a apart from the researcher there are one person who investigate the entire research, that we call the investigator role. Okay, so that's all about the important elements which was important before moving the next in the research design. So classification almost clear है. मैं ये confuse नहीं करना चाहूँगी. ये वाला classification दिखा के जो मैंने आपको last slide में जो describe किया था, that is best classification of research design. Okay, so today we'll start the quantitative research design. मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, क्वांटिटेटिव में बहुत सारे होते हैं बिकॉज नेम इटसेल्फ टेलिंग क्वांटिटेटिव. ओके, मीन्स देयर विल बी दी क्वांटिटीज. एंड नाउ वी आर स्टडिंग द क्वांटिटेटिव मीन्स देयर विल बी सो मेनी डिस्क्रिप्शन, सो मेनी टाइप्स विल बी देयर. अब क्वालिटेटिव में मैंने बहुत लिमिटेड बताए हैं, राइट? तो हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं जिसके डिस्क्रिप्शंस बहुत सारे सब टाइप्स हैं. ओके, so first under the quantitative, now we have to understand what is the meaning of quantitative. Already हम बहुत पढ़ चुके हैं about the quantitative. It is a formal, objective, systematic process in which the numerical data are used to obtain the information. That's it. Only the numerical data will be used for information. Okay, so these are the uses. Describe the variables, examine the relationship between the variables, two variables or three variables between the to determine causes and effects of interaction between the. ये सब sentence आपको भी समझ में नहीं आ रहा. I'll teach you the experimental research, then you will understand the effect of one thing to other. Next is now start the experimental research design. So experimental नाम से पता चल रहा है. For experimental research design, I'll use my whiteboard to understand, to teach you. See, मैं कोशिश करती हूँ आपको इससे समझाने की कि what is experimental research design. Experimental is most scientifically sophisticated research method in nursing, especially
हम नर्सिंग में अक्सर विल डू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर कंसर्न विद examination of the effect of dependent variable. Now first of all you have to understand the dependent variable and independent variable. Let me use my whiteboard.